Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome to Sir Hasnan's English Language Academy. Today in this video we are going to learn about articles. Many students often ask me questions where to use a and where to use n. In this video today we are going to learn about the usage of a or n. First of all, we need to know a or n are indefinite articles because they refer to any singular noun. For any singular noun, we use a or n. For instance, a table, it means any table. An umbrella, it means any umbrella. An Indian guy, it means any Indian guy. A Pakistani player, it means any Pakistani player. Let's learn where to use a and where to use n. A is used before consonant sounds, while n is used before vowel sounds. यहाँ हमें इस बात को सीखना पड़ेगा कि आ कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आता है, नॉट बिफोर द कॉन्सोनेंट इटसेल्फ. यानी कि अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन उसका साउंड कॉन्सोनेंट नहीं है तो हम आ नहीं लगाएंगे. बट व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन, हमें ये देखना है कि किसी भी वर्ड का इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉवल साउंड है. अगर साउंड वॉवल है तो एन आएगा, अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट है तो आ आएगा. सो वॉवल साउंड मीन्स साउंड स्टार्टिंग विद द उर्दू लेटर अलिफ. वॉवल साउंड किसे कहते हैं? हर वो साउंड जिसकी स्टार्टिंग अलिफ से होगी वो वॉवल साउंड कहलाएगा. जबकि कॉन्सोनेंट साउंड मीन्स साउंड स्टार्टिंग अदर देन द उर्दू लेटर अलिफ. यानी कि हर वो साउंड जो अलिफ के अलावा स्टार्ट होगा उसे हम कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे. लेट्स लुक एट दीज एग्जाम्पल्स हियर. एन एप्पल. सो हियर apple is starting with aleph, so that is the consonant sound, so we are using an here. Next example, an elephant. You can look at it, elephant starts with aleph, hence we use an before elephant. An inkpot. Inkpot is also starting with aleph, so we are using an before inkpot. An orange starting with aleph, hence we are using an before it. An umbrella. So you can see umbrella is starting with aleph, so we are using an before it. Some more examples before you. An hour. Hour starting with aleph. आप देख सकते हैं कि आवर को जब हम उर्दू में लिखेंगे तो ये अलिफ मद ज़बर आ वाव रे वर आवर. हालांकि आवर की स्टार्टिंग एच से हो रही है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम एन को कॉन्सोनेंट से पहले या वॉवल से पहले नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट या वॉवल साउंड के ज़रिए से लगाते हैं या इस्तेमाल करते हैं. तो आवर का जो साउंड आ रहा है वो अलिफ से आ रहा है. दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग एन बिफोर आवर. लुक एट दिस एग्जाम्पल. एन एम ए इंग्लिश. M itself is a consonant, but it is giving vowel sound. That's why we are using an MA English. Next example, an honest man. Honest is starting with H with consonant, but it's giving vowel sound. So that's why we are using an. An X-ray. Again, X-ray is giving vowel sound, and that's why we are using an before X-ray. An FA degree. FA is also giving vowel sound and we are using an before that. And now look at these examples. A table. Table is starting with T, which means other than aleph. So that gives consonant sound and that's why we are using A before it. A chair starting with Che. So that is why we are using A before this. A fountain. Fe, not aleph. So a fountain. A book starting with Be, not Aleph. That's why we are using A before this. A giraffe. Now look at these examples here.
A European man. Although the word European is starting with a vowel, but it's not giving a vowel sound. European is starting with ye in Urdu. It's not alif. Only alif sound is the vowel sound. So that is why we are using a European man. Now look at this example. A unique method. यूनिक ये से स्टार्ट हो रहा है, अलिफ से नहीं, तो हमने इससे पहले आ लगाया. A university, ये से स्टार्ट हो रहा है, then we are using a before this. A utility store, ये से स्टार्ट हो रहा है. A uniform, ये से स्टार्ट हो रहा है. So now we have understood this thing, my dear students, कि आ और एन का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट और वॉवल साउंड पर होता है. तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इस वर्ड से पहले, इस सिंगुलर नाउन से पहले आ लगाना चाहिए या एन, उस इंग्लिश के वर्ड को उर्दू में लिख कर देख लें. ना कि उसकी उर्दू मीनिंग, बल्कि उस वर्ड को उर्दू में लिख के देख लें. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है, अगर उसका साउंड अलिफ से आए, स्टार्टिंग साउंड अलिफ से आए, तो आप उससे पहले एन लगाएंगे. और अगर अलिफ के अलावा किसी भी उर्दू लेटर से स्टार्ट हो रहा हो, तो उससे पहले हम आ लगाएंगे. आई होप माय डियर स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो and you must have understood the difference between the usage of a and an. We will meet again in another informative video. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.